हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी एक नई लेक्चर सीरीज़ के साथ। ये है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्सेज़ 14 जिसका टाइटल है रिंग थ्योरी। और ये लेक्चर आपके इस पेपर का फर्स्ट लेक्चर है जिसके अंदर हम रिंग की डेफिनेशन और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को डिस्कस करने वाले हैं। आप ग्रुप थ्योरी का पेपर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। व्हाट आई वांट टू सजेस्ट कि ग्रुप थ्योरी के कुछ कंसेप्ट्स को आपको रिकॉल करना चाहिए इन बिटवीन लेक्चर्स। जहाँ पर हमें ग्रुप थ्योरी के किसी भी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी आई विल एक्सप्लेन, बट स्टिल आपको ग्रुप थ्योरी के कुछ फंडामेंटल्स क्लियर होने ही चाहिए टू establish a better understanding with this paper. Okay, so let us start this ये journey of ring theory. हमने जब ग्रुप थ्योरी में बात की थी तो हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट था Z, ओके, कैपिटल Z, और इस पर हमारे पास कोई एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड था। व्हेन दिस पर्टिकुलर जब भी हमारे पास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हो उसे हम अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। और क्योंकि इस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को लिखने के लिए वी रिक्वायर्ड टू कंपोनेंट, फर्स्ट इज नॉन एम्प्टी सेट एंड अदर इज बाइनरी ऑपरेशन। सो वी कैन से दिस algebraic structure is an ordered pair in which the first component is a non-empty set and the second component is a binary operation defined on the set Z। ठीक है, जब जब ये एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है तब हम इसे ग्रुप बोलते हैं। और जब ये ऑपरेशन स्टार कम्यूटेटिव हो जाता है तब हम इस ग्रुप को कम्यूटेटिव ग्रुप या फिर अबिलियन ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, सो आई होप यू क्लियर विद द कंसेप्ट ऑफ अबिलियन और यू कैन से कम्यूटेटिव ग्रुप। ओके, अब क्योंकि हम कह रहे हैं कि किसी ग्रुप के लिए हमने एक बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बात की, now we want to have a scenario where we have some set, suppose R, which is of course non-empty, and we have two binary operations star 1 and star 2. Okay, again we have a triplet of non-empty set and two binary operations which are defined on the set R. ओके, तो इस तरीके का भी एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर हमारे पास है और इसी तरीके के जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है उसको हम रिंग बोलने वाले हैं। अगर ये कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेगा तब हम इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को रिंग बोलेंगे। ठीक है, सो बेसिकली यू कैन सी कि ग्रुप का एक एक्सटेंशन ही है रिंग। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रुप जब भी हम इस आर को इस फर्स्ट ऑपरेशन के साथ देखेंगे दैट इज स्टार 1, then this will always form a commutative group. Okay, so basically if we add another operation with the appropriate property then this algebraic structure becomes ring. Okay, so let us start the definition of ring by just looking at the definition of group. Okay, so in between we will have the definition of group. I will tell you कि यहाँ पर ये ग्रुप बन गया और फिर हम जब इसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ को ऐड करेंगे तो वो रिंग बन जाएगा। ठीक है, सो जब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स है या फिर आप कह सकते हैं कुछ स्टेटमेंट्स है या कुछ इन्फॉर्मेशन है जो भी आपको पता होनी चाहिए। इन बिटवीन द लेक्चर आई एम नॉट गोइंग टू राइट दैट, बट जो आपको पीडीएफ अवेलेबल होगी इसके लिए वहाँ पर वो सारी चीज़ें ज़रूर मेंशन होगी। ठीक है, ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट नेसेसरी फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम्स, बट एज ए इंफॉर्मेटिव पॉइंट ऑफ व्यू आपको वो सारी चीज़ें पता होनी ही चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो कोई बड़ा लॉस नहीं है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट दिस लेक्चर बाय राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ अ रिंग। ओके, सो बेसिकली जब भी हम किसी भी रिंग की बात करेंगे तो हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए और दो बाइनरी ऑपरेशंस होनी चाहिए। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू हैव द डेफिनेशन ऑफ रिंग। ठीक है, राइट नाउ जब हम इस डेफिनेशन को लिख रहे हैं तो वहाँ पर हम इस तरीके का एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे। वी विल सून डिफाइन दैट ऑल्सो, जस्ट फॉलो दीज वर्ड्स ओनली। ओके, सो अ रिंग, क्योंकि रिंग आर ग्रुप को हमने जी से रिप्रेजेंट किया था तो रिंग को हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सो अ रिंग आर is a set with
two binary operations. First is addition, and that will be denoted by A plus B. So if A and B are two elements from R, then their addition will be denoted by A plus B. Okay, and the second operation is multiplication, and that will be of course denoted by A time B. Okay, such that for all A and B, C in R, we have the following 6 properties. The first one is about, let me call it as commutativity of addition. Okay, of addition. So it says that A plus B must be equals to B plus A, and this should be true for all A and B in R. Okay, we don't need to mention again and again. The second is about the associativity of addition. You very well know कि associativity का meaning क्या है. When we add A plus B and then add C, that will be same as A plus then addition of B and C. Okay, the third property is about the existence of additive identity. So it says that the existence of additive identity in R. So what does it mean? That there is an additive identity that is 0. And what does it mean? Additive identity का क्या meaning है? That is, there is an element, पहले तो ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट होना चाहिए और फिर ये आर से बिलोंग करना चाहिए. ठीक है, एलिमेंट 0 in R such that A plus 0 is equals to A, and that should be true for all A in R. Now here we don't need to write 0 plus A, okay, because in the first property we have already mentioned कि addition property commutative है. ठीक है, तो जैसे हमने लिखा A plus 0, then this will be equal to 0 plus A also, right? Now come to the fourth property, and it is about the existence of additive inverse in R. ठीक है, additive inverse of some element, right? So there is an element that is minus A in R such that we can have A plus that negative A is equals to 0. ठीक है, again we even don't need to write minus A plus A because we have already mentioned that additive operation is commutative in the first property. The fifth one is about the associativity of multiplication. So the fifth one is associativity of multiplication operation, right? And it is meant to be A time BC is equals to AB time C.
Okay, then the third property is about the distribution of addition from the left and right to addition. Okay, so distribution of multiplication over addition. So it says that we must have a time b plus c that must be equals to ab plus ac, and secondly we must have that b plus c from the right hand side, it must be equals to ba plus c. Okay, so if you look at these four properties, can you realize कि associativity, commutativity of addition, existence of additive identity and existence of additive inverse, ये चारों फर्स्ट प्रॉपर्टी वो शो करता है कि R एडिशन ऑपरेशन के साथ एक कम्यूटेटिव ग्रुप है. ओके, और उसके बाद जब कोई भी कम्यूटेटिव ग्रुप में हम एक ऑपरेशन और ऐड कर देते हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेशन, और वो ऑपरेशन अगर एसोसिएटिव है और डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर द फर्स्ट ऑपरेशन, देन दैट स्ट्रक्चर विल बी अ रिंग. ओके, so this is about the definition of ring. whenever we want to prove कि कोई हमें given algebraic structure एक ring है, तो उस कंडीशन में we need to verify all the 6 properties. okay, अगर आपको डायरेक्टली पता है फ्रॉम दी कंसेप्ट ऑफ ग्रुप थ्योरी कि कोई पर्टिकुलर algebraic स्ट्रक्चर वेयर वी हैव अ नॉन एम्प्टी सेट एंड अ बाइनरी ऑपरेशन, कि वो जो algebraic स्ट्रक्चर एक अबिलियन ग्रुप है या कम्यूटेटिव ग्रुप है, तो आप फिफ्थ और सिक्स्थ प्रॉपर्टी जो कि बताती है हमें एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, केवल इन दो प्रॉपर्टी को ही वेरीफाई करना होता है. ठीक है, जैसे कि आपको इंटीजर के साथ एडिशन ऑपरेशन दिया जाए, सो वी दिस इज वेरी वेल नोन कि ये एक कम्यूटेटिव ग्रुप है. ओके, तो उस केस में आपको केवल फिफ्थ और सिक्स्थ प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाइड करनी है. इस तरीके का एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करने ही वाले हैं. नाउ व्हाट दीज ऑल 6 प्रॉपर्टीज है, हम इन सभी का मीनिंग लिखते हैं यहाँ पर. सो दिस इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ रिंग. ओके, अब इस डेफिनेशन के अंदर हमारे पास क्या है उनको हम लिख रहे हैं. जैसे मैंने बताया कि एक अबिलियन ग्रुप है और इसके बाद मल्टीप्लिकेशन का एसोसिएटिविटी है और डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रॉम द राइट एंड द लेफ्ट ओवर एडिशन. तो बस हमने ये एक डेफिनेशन लिखनी है जो कि शॉर्ट एंड स्वीट है फॉर द रिंग. सो वेन एवर यू आर आस्क्ड व्हाट इज अ रिंग in a brief way, so you can write, so let me write, thus a ring is an abelian group under addition, also having, जैसे हमने कहा दिस इज अ बिलियन ग्रुप अंडर एडिशन, मतलब हमने जो फर्स्ट 4 प्रॉपर्टीज है उनकी बात कर ली है. नाउ वी आर राइटिंग द फिफ्थ प्रॉपर्टी, ऑल्सो हैविंग एन associative multiplication. Okay, this is the fifth property, that is left and right distributive over addition. ठीक है, now this defines the sixth property. So this is about the definition of ring. अब हमने जैसे एडिशन के लिए हमने कम्यूटेटिविटी की बात की, हमने एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट की बात की, ऐसे ही हमने एडिशन के रेफरेंस में इन्वर्स एलिमेंट की बात की. अगर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए भी ये सारे कंसेप्ट ट्रू हो, ऐसे सारे इन्वर्स और आइडेंटिटी एलिमेंट और कम्यूटेटिविटी होल्ड हो, तो उस केस में रिंग के साथ कोई और भी एडजेक्टिव आ जाते हैं. ठीक है, एक रिंग के लिए उसका मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन कम्यूटेटिव ज़रूरी नहीं है. मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के रेफरेंस में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करे ये भी हमेशा नेसेसरी नहीं है. एंड सेम थिंग फॉर दी
inverse element. Okay, so let me point out this. Not. Okay, so in a ring, the multiplication need not, the first thing is be commutative. ठीक है, जरूरी नहीं है कि किसी रिंग में मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव हो. द सेकेंड थिंग इज अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट. ओके, सो मल्टीप्लिकेशन नीड नॉट टू हैव आइडेंटिटी. और जब हम रिंग को डिफाइन करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन, तो यहाँ पर हम इसके लिए एक वर्ड यूज कर रहे हैं, वो है यूनिटी एलिमेंट. ठीक है, तो सेकंड ऑपरेशन जो कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, उसके लिए जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा उसे हम यूनिटी एलिमेंट बोलेंगे. एंड द थर्ड इज टू हैव अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. ठीक है, सो ये जरूरी नहीं है कि एक रिंग के पास ये सारी चीजें हो, बट लेट मी राइट दैट when it is then ring is commutative ring. फिर हम रिंग को क्या बोलेंगे? रिंग इज कम्यूटेटिव रिंग. जब हम ऐसे बोलते हैं कि किसी रिंग के लिए सेकंड ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस केस में when it exists then we call ring is ring with unity. ठीक है, ये एडजेक्टिव्स आ रहे हैं रिंग के साथ. और अगर किसी एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, व्हेन एग्जिस्ट देन दीज एलिमेंट्स जिनके लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड यूनिट्स. ठीक है, जो जो एलिमेंट्स के इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं यूनिट्स. तो अब हम सभी जब किसी रिंग के लिए मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन कम्यूटेटिव है तो उसको कम्यूटेटिव रिंग बोलते हैं. अगर सेकंड ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसे यूनिटी रिंग विद यूनिटी बोलते हैं. और जब जिन जिन एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे हम यूनिट्स बोलते हैं. इन सभी को हम एज ए डेफिनेशन अब पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सो यू कैन राइट, आई थिंक यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड, बट स्टिल आई एम गोइंग टू राइट द डेफिनेशन ऑफ कम्यूटेटिव रिंग. ठीक है, सो फर्स्ट वी हैव दैट commutative ring with unity. क्योंकि ये फ्रेज हम बार बार देखेंगे, बार बार लिखेंगे. सो when the second operation, or you can say multiplication, is commutative, that is, you can say AB equals to BA for all A and B in R, and multiplicative identity exists. That is, you can have a time 1 that is equals to, अब क्योंकि ऑलरेडी कम्यूटेटिव हो गया है, सो वी डोंट नीड टू राइट 1 टाइम ए. ओके, इट मस्ट बी इक्वल्स टू a for all a belongs to R. then the ring R is said to be commutative ring with unity.
Okay, so this is the definition of ring with unity. Now, what is units in a ring? So this is about unit. हो सकता है एक ही यूनिट हो, so that's why I'm writing in a bracket unit in a ring. So an element A belongs to R is said to be a unit if its multiplicative inverse that is A इनवर्स और उसे हम क्या लिख सकते हैं 1/A एग्जिस्ट. ठीक है, देन A is said to be a unit in the ring R. ठीक है, so this is about some terminologies in a ring. ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स की जिससे कि हमारे पास ये डेफिनेशन थोड़ी क्लियर हो जाए. ठीक है, सो लेट अस डिस्कस सम एग्जाम्पल एंड द हेडिंग इज example of ring. And in this series of examples, we are going to have the first example is example 1, and it says that show that the set Z of integers under here the word is ordinary. okay, और कुछ बुक्स में इसको यूजुअल भी लिखते हैं, यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. is a commutative ring with unity. इसे हम डिनोट करेंगे commutative ring with unity, that is CRU, commutative ring with unity 1. ठीक है, and the units of Z are 1 एंड -1. ठीक है, जब भी हम यूनिटी की बात करेंगे तो यूनिटी का इन्वर्स तो हमेशा यूनिटी रहेगा ही. ठीक है, तो यूनिटी एलिमेंट तो हमेशा यूनिट होता ही है. उस यूनिट एलिमेंट के अलावा कौन कौन से यूनिट्स है, दैट इज इंटरेस्टिंग थिंग. नाउ लेट मी राइट द सॉल्यूशन टू दिस, एंड ऑफ कोर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि वी नो दैट Z प्लस ये एक अबिलियन ग्रुप है, इज एन अबिलियन ग्रुप एंड what you can have, and A time B.Sc is equals to A B times C, that is the associativity, and this is true for all A, B and C in the set of integers. And then you have that A B plus C is equals to AB plus AC for all A, B and C belongs to Z. And the third one is B plus C A is equals to BA plus C, and this is true for all A, B and C belongs to Z. So this shows the associativity for the multiplication in integer.
and this is the distribution of multiplication over the addition from the left and right hand side. ठीक है, so this is, there is nothing to prove for the integers, क्योंकि जब भी हम दो integers के multiplication या फिर addition की बात करें तो हम उन्हें किसी भी तरीके से multiply या फिर add कर सकते हैं. ठीक है, and obviously which show that z, now I'm writing this structure z plus and multiplication, okay, is a ring. ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉम्यूटेटिविटी की. तो क्या हम किन्हीं भी दो इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं? द आंसर इज यस. सो फर्स्ट वी कैन सी दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी ए फॉर ऑल a and b belongs to z. Okay, this implies that multiplication is commutative, right? And the other thing is about the unity. So what about the unity? We know that 1 belongs to z such that a time 1 is equals to a for all a belongs to z. इसका मतलब this 1 will serve as a unity element for the set of integers. Okay, so which implies that 1 is the unity एलिमेंट. यूनिटी मतलब सेकंड ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट है उसे हम यूनिटी एलिमेंट बोलेंगे, और यहाँ पर सेकंड ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन. Unity element of z with 1 contained in z. Okay, एग्जिस्ट होना और इस सेट का एलिमेंट होना दोनों ही डिफरेंट थिंग है. एंड दिस इज, अब अगर जैसे ही कम्यूटेटिव है और यूनिटी है तो हम क्या कह सकते हैं? दिस इम्प्लाइज दैट z प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी 1. ठीक है, this one is unity. Now we are going to discuss the set of units. Okay, so now set of units of z. ठीक है, अब हमें ऐसे एलिमेंट्स चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता हो. अगर मैं एक रियल लाइन पर इन सारे इंटीजर्स को बताऊं, क्योंकि वी नो कि 1 और -1 के अलावा कोई भी यूनिट्स है नहीं, तो अगर हमारे लिए ये रियल लाइन है और इस पर हम पॉइंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, सपोज दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड सो. ठीक है, एंड लाइकवाइज वी हैव -1, दिस इज -2, -3 एंड सो. अगर हम इनके इन्वर्स की बात करेंगे तो यू कैन सी that if I talk about the inverse of this, then it will be -1/3, which is not a member of z. अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसका इन्वर्स होगा -1/2 एंड ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ मेंबर ऑफ z. एंड इसके जब हम इन्वर्स की बात करेंगे तो -1/1 एंड ऑफ कोर्स दिस इज इक्वल्स टू -1 एंड दैट इज इन z. सो ये हमारे लिए एक यूनिट रेफर करेगा. अब 0 क्योंकि हम नॉन जीरो एलिमेंट्स की यूनिट आइडेंटिफाई करते हैं. अब जैसे ही 1 के बारे में बात करेंगे तो 1/1 दैट इज इक्वल्स टू 1 एंड ऑफ कोर्स दिस इज इन z, राइट. 2 के लिए बात करेंगे तो 2 का इन्वर्स होगा 1/2 एंड ऑफ कोर्स दिस इज नॉट इन z, एंड लाइकवाइज फॉर 1/3 एंड विच इज नॉट इन z. सो हियर यू कैन सी -1 और 1 ही दो ऐसे एलिमेंट है जिनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, और दैट्स व्हाई दीज आर द ओनली यूनिट्स इन दिस सेट ऑफ इंटीजर्स. ओके, सो थस 1 and -1 are the only integers whose multiplicative inverse exist. Okay, so 1 and -1 are the units of
Z, ठीक है। सो दिस इज अबाउट एग्जाम्पल 1 जहाँ पर हमने सेट ऑफ इंटीजर्स को एज अ रिंग डिस्कस किया है।